Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello. And a sad day indeed, as usually. The Deputy Chief Minister of Maharashtra, Ajit Pawar, along with him, four others, including pilots, are no more. May their souls rest in peace and heartfelt condolences to the bereaved families. Before even forgetting what has happened in Air India crash, Vijay Rupani, ex-Chief Minister, along with more than 240 members, traveling passengers killed. And till today, no reason. Civil Aviation Ministry and Director General Civil Aviation, sleeping mode. And the governments, whether it is the Gujarat or this government, in a sleeping mode. I have done a story exclusively. Who was supplying turbine fuel? Gujaratis. And who is maintaining the Ahmedabad airport? And that too, Vijay Rupani, as being alleged in the media that he was supposed to come out with a explosive press conference on the happenings in Gujarat or at the center after his return from London. Then what happened? That rat, how it came off, we have done an exclusive story. Till today, nothing is coming out. How this government is working, Modi's government. This is for everyone. Life is precious, whoever it is. And similarly, till today, Air India crash, it has got more than 1,000 crores as insurance. The Tata Air India. How much of money has been distributed as compensation to those passengers, unfortunate passengers who lost their lives? They have paid to travel. So where is the safety mechanism? The maintenance aspects still questionable. The DGCA and the Civil Aviation Minister, Mr. Rammohan Naidu, the arrogant gentleman, very young, he has to learn a lot. How he was trying to make fun of Hindu travelers to Kumbh Mela or other places, how the prices have been increased, the airfares, even to Shabarimala. It's a shame on him. And then what is that he has done? How is that this laxity is happening? Not just this thing, the way they have handled the Indigo's blackmailing in the midst of our Shabarimala Yatra, Ayyappa Diksha. So many have suffered and so many who were traveling on emergencies and other, they have booked tickets. How their life was made miserable. Still this man doesn't resign. Still Modi government is not accountable. It's a shame. It's a shame. And Director General Civil Aviation, sleeping mode. So every time these type of incidents happen and the mourning is done, and as in Vijay Rupani's case, here is also a suspicious needle is being pointed. I am not here to judge. I am trying to show everything on record with evidences. Rest it is for the people to understand and decide. My number is 94404 65339. Anyone who is opposing or who has got anything better than my show, you are most welcome. I'll connect you from wherever you are, because I have done an extensive research and story thanks to my chief editor, Dr. Koka Sridharji, and the management of Deccan Post, how things were bad and how the erstwhile, the incumbent Chief Minister, Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, was allowed to fly on that ill-fated day, September 2, 2009. I still remember. After that, we have done a lot of investigation and we said, is it accident or sabotage? Still that story hangs in. I only hope his son and his wife and daughter and all those scores of people remember on what we have done, Deccan Post story. And the same it mimics. Was it a sabotage? With evidences, we have done that story. I was allowed to go to every place, right from Begumpet, where this Bell helicopter was there. And then how it started and who were maintaining, what were the weather patterns or reports, including the pilot, Rajat, and the intelligence reports. Everything we have taken up and we have brought in a comprehensive picture. High commands, whichever is at Delhi, high commands. Who commands? High commands. If high commands are not happening, if something is going against the wind of high commands, how the oil wala will come and how the other CIAs will come.
all things, but unfortunately, they are forgotten by their own offsprings. And such people who were in the suspected list, they become MPs from their own state and their party supporting. That is the hindsight. And because as a citizen, concerned citizen, I would love to do a story when incumbent chief minister dies. What if an incumbent chief minister dies? Now an incumbent deputy chief minister dies. What sort of security you are going to provide to common man? This is what my major contention is all about. So I'm trying to do this story in English itself so that everyone understands. And you can always have the Hindi and Telugu through my YouTube. So once again, as usual, I'll try to show you what has happened today. And before that, I'll try to show you our story. This is the one. You can September 11th to 17th, 2009 issue, Deccan Post. I'm again thankful to Dr. Goka Sridharji, who was our editor-in-chief, who has allowed me, and because of his precise constitutional knowledge, we could turn a crime story into a headline, a cover story. And here is YSR's, his body got smothered into this thing. And even before the entire corpse was gathered, the political drama, who will be the chief minister, started. Very unfortunately, very sad state of affairs. And I am trying to pay my respects to him. Because of him, Jawaharlal Nehru Journalist Mutually Aided Cooperative Housing Society, land was allotted by him, by his government. And after that, again, Revant Reddy came back and he has handed over paid Bashira, but we are still hanging in fire. That is why my remembrance of Y.S. Rajshekar Reddy is very eternal. Though we fought for Telangana and brought, we attained statehood. May his soul rest in peace. Once again, similar fate has befallen on Ajit Pawar. Very sad story. And I'll just show you some images because we always believe in doing story with does this really plane crash upon their government involvement? College of Commerce. Very early hours. Crash lands in Baramati, his backyard. So he loses life there. Very sad state of affairs. I'm trying to show from where I gathered these are all the vital evidences. These are all the vital evidences. And immediately, this post in Times of India, plane crash. Ajit Pawar plane crash live update. NCP chief state funeral on Thursday. PM Modi, Amit Shah likely to attend. A day of national mourning and 3 days. The flag will be flying at half-mast. Ajit Pawar plane crash live. Maharashtra Deputy Chief Minister and Nationalist Congress Party. Chief Ajit Pawar died on Wednesday morning after a chartered plane crash in Baramati. 5 people on board, including the crew, were killed when the plane flying from Mumbai crash landed at 8:45 local time. Director General of Civilian. So here, Mamata Banerjee. It is very unfortunate. Sharad Pawar himself has very clearly stated that an accident occurred and tragically lives were lost in the accident. And that politics should not be played over this. I am deeply saddened that we have reached such a point where such dirty and despicable politics are being played out even over someone's death. I am very sad that Mamata Didi is stooping to, this is Fadnavis, stooping to such a low level in politics. It is very unfortunate and completely wrong. She should not have made such a statement, says Maharashtra CM Devendra Fadnavis on Mamata Banerjee's statement.
And what she said, and see, the funeral will be in Baramati as usual, from where he has got. Uh, and also, I'll try to bring that also, what she said. He is trying to condemn, but what she said also, I'm trying to bring it out. Son and Dr. Kumar and his son. There were allegations against his son also. That time also he retracted. We have done a show that I'll try to show you in. Sharad Pawar rules out conspiracy. This is a huge loss, and Sharad Pawar was to join. Both have joined. I don't know. He was to join BJP. So many theories were there. Muralidhar. Nitin Nabin condoles BJP's president. Forensic team carries out investigation spot where the charter plane of Maharashtra. All 5 people died on board. That's a routine practice collecting, and I'm trying to just show you. Maharashtra MNS Chief Raj Thackeray leaves for Baramati for his residency profile. Key questions that remain unanswered from Ajit Pawar. The tragic plane crash in Baramati that claimed the life of Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has left many unanswered questions about the circumstances of his final journey. While initial reports confirm that Pawar was on board a Learjet 45 along with 2 staff members and 2-person crew, the exact sequence of events leading to the crash remains under investigation. Ajit Pawar plane crash chose different path but did not break relationship, says Uddhav Thackeray. Shiv Sena UBT Chief Uddhav Thackeray on Wednesday controlled Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar's death in a plane crash and said even though NCP chief chose a different path in politics, he did not let their relationship suffer. In a post on X, the former Chief Minister said in Pawar's death he has lost a steadfast leader and excellent former cabinet colleague. His son and former Minister Aditya Thackeray also paid condolences. And the condolences were pouring in from everywhere. Vidip Jadhav, a personal security officer attached to Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar, was among those who died following aircraft in Baramati. Jadhav was traveling on the Learjet along with him. See, he also dies along with the crew. And there was another one. And I'll just try to show you what Mamata Banerjee. She said it's a conspiracy. Yeah, here. She said it's a conspiracy. So I'm just unable to get. Here is how this thing has happened. That's the background. Flames
erupting flames. Sad. The pictures really sad story. So he's gone, is no more. And here is another one. And that is how they raise the doubts. And Ajit Pawar will return to MVA. NCP factions to unite, claims Raut. 24th January, Sanjay Raut confirmed that NCP would merge with Sharad Pawar party and join the MVA. 28th January, Ajit Pawar died in a mysterious plane crash. So this is how the narration has been there. And this is the narration. They'll try to play the prominent personalities who lost their lives also. Vijay Rupani, former CM of Gujarat, Sanjay Gandhi, member. These are all Vice Rajshekar Reddy, Bipin Rawat, CDS of the Indian Armed Forces, Ajit Pawar now. How they lost their lives. I'll try to play another video also. Just few days ago, how he was answering a question on the allegations against him. He has quietly answered them, saying that there were allegations of 70,000 irrigation scam against him. But how he could come out and how BJP has allied with him, people should not forget. These were his words. Here it is. He was supposed to move away from BJP and join. Yeah. Yes, sir. अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। अजीत पवार का प्राइवेट Hmm. 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 Sir. Thanks. प्लेन सुबह 8 बजे मुंबई से उड़ा। 43 मिनट तक वो हवा में रहा। 256 किलोमीटर की दूरी तय करके 8:45 पर वो बारामती पहुंचा और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए वो क्रैश हो गया। प्लेन में अजीत पवार सहित 5 लोग मौजूद थे और सभी की इसमें मौत हो गई है। तस्वीरें बहुत विचलित कर सकती हैं, इसलिए कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। यह भी हैरान करने वाली बात है कि भारत के वीआईपी लोग प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश में ही मारे जा रहे हैं, और खास तौर पर सीएम और डिप्टी सीएम टाइप के लोग। मोदी सरकार बन चुकी थी, साल था 2014, महीना था जून का और तारीख थी 3 जून। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे की सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट जाते समय दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। सब हैरान थे, जब नेताओं की फ्लीट के समय सड़कें खाली करा दी जाती हैं, तो फिर कैसे गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद आती है 8 दिसंबर 2021 की तारीख। तीनों सेनाओं के मुखिया विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। घटना हैरान करने वाली थी। फिर आती है 21 जून 2025 की तारीख। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। और अब अजीत पवार का दो इंजन वाला लेयर जेट 45 प्राइवेट प्लेन क्रैश हो जाता है और इसमें उनकी मौत हो जाती है। महाराष्ट्र के 2 डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे और अजीत पवार 2014 के बाद मारे जाते हैं। एक पूर्व सीएम विजय रूपाणी प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है?
दोस्तों, ममता बनर्जी ने अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की योजना बना रहे थे। उसी बीच उनकी मौत का होना सवाल पैदा करता है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आप उन्हें सुनिए। यहाँ नेता भी सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि वो बीजेपी से अलग होने वाले थे और आज अचानक उनका निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच होनी चाहिए। क्या ये बेवजह डर फैलाना है या कोई साजिश? दोस्तों, अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसल कर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। यह भी जानकारी मिली है दोस्तों कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। घटना के समय बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर नहीं था। अब खेत पर काम कर रहे गांव के लोगों ने क्या कुछ देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ बताया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये बहुत तकलीफ दे था। जब एयरक्राफ्ट फिसला तभी लगा था कि वो क्रैश हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। विमान गिरते ही बड़ा धमाका हो गया। इसके तुरंत बाद हम इस तरफ दौड़े और देखा कि एयरक्राफ्ट तो आग का गोला बन चुका है। इसके बाद विमान में 4 से 5 बड़े बड़े धमाके हुए और फिर कई लोग पहुंचे और विमान से लोगों को निकालने की कोशिश करने के लिए वहां गए, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। भारत का एविएशन मंत्रालय बिल्कुल दो कौड़ी का हो चुका है। उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जिस प्राइवेट प्लेन में अजीत पवार बैठे थे वो कोई मामूली प्लेन नहीं था। उसका नाम लियरजेट 45 है। ये बड़ा प्रीमियम बिजनेस जेट है। हाई सिक्योर प्लेन है। ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। उसमें दो दो इंजन मौजूद हैं। 6 से 8 यात्री इसमें बैठ सकते थे। ये छोटे रनवे पर बड़ी आसानी से लैंड कर सकता था। बिजनेसमैन और वीआईपी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये प्लेन भी हादसे का शिकार हो गया। जो 5 लोग इस प्लेन में मौजूद थे वो सब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इनमें सबसे पहले तो अजीत पवार हैं, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। दूसरे एचसी विदत जाधव, जो अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। कैप्टन सुमित कपूर, जो पायलट थे। कैप्टन शांभवी पाठक भी पायलट थी। और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये सब के सब लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों, 22 जुलाई 1959 को आशा और अनंतराव पवार के घर जन्मे अजीत पवार ने 1982 में अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा था, जब उन्हें एक चीनी मिल के बोर्ड में चुना गया। रिकॉर्ड था, 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अनुभवी राजनेता अजीत पवार ने कभी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा नहीं छिपाई। जुलाई 2023 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने से पहले वो नवंबर 2019 में उप मुख्यमंत्री थे, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन उनकी सरकार मुश्किल से 2 दिन ही चली। अजीत पवार मौजूदा सरकार में वित्त और योजना मंत्री थे। अगले महीने 23 फरवरी को मुंबई में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने पर 26-27 का बजट पेश करने वाले थे। उससे पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया। ममता बनर्जी ने किसी साजिश की तरफ इशारा किया है और इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में करने की मांग की है। जब तक ये खबर मैं आपको बता रही हूं तब तक भारत के एविएशन मंत्री का कोई बयान नहीं आया है। जो कुछ है सब मोदी जी ही हैं। ऐसा लगता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री को सरकार ने सिर्फ पकौड़े तलने के लिए रखा है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। Yeah, good. It's good news, and I'll try to show you the other aspects of
So we're trying to bring you many images, and then I'll just try to uh, show you the other aspects also before we say bye. भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास, कौन कह रहा है? अजीत पवार। गजब हो गया, शाह की बीजेपी पर इल्जाम कौन लगा रहा है? डिप्टी सीएम। भ्रष्टाचार के आरोप। बीएमसी के चुनाव के नतीजे तो निपट गए, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अजीत पवार ने एक नया सियासी धमाका करके भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक हिला दिया। इल्जाम कोई छोटा मोटा नहीं, सिंचाई प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी के महाघोटाले का है, जिसका जिक्र अजीत पवार कर रहे हैं। अजीत पवार, और जो इल्जाम इन्होंने लगाया है उस पर हम आएंगे, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यानी बीएमसी चुनाव के नतीजे और दूसरी तरफ अजीत पवार का सीधा डायरेक्ट मोदी और अमित शाह को निशाने पर लेना और चौराहे पर इल्जाम लगाना, भ्रष्टाचार जैसे संगीन इल्जाम के। अब सवाल यह कि अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर इस महाभ्रष्टाचार और घोटाले का इल्जाम अभी ही क्यों लगाया? बीएमसी चुनाव के नतीजे और ठीक उसी वक्त क्या चाचा और भतीजा यानी कि शरद पवार और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं, या फिर खेल होने जा रहा था उसे रोकने की कोशिश? क्या बीजेपी के खिलाफ अजीत पवार ने एक ऐसा बिगुल बजा दिया है जिसकी धुन इस वक्त दिल्ली वालों को हिला रही है, दिल्ली के तख्त तो ताज को हिला रही है? महाराष्ट्र की सरकार पर उसका असर पड़ना तय है। आप गौर कीजिए, जिस भ्रष्टाचार को अजीत पवार के ऊपर मोदी और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने थोपा था ना, कि कहा था ना ये भ्रष्टाचारी है, चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, और वही अजीत पवार कह रहे हैं मेरे पास सिंचाई प्रोजेक्ट में बीजेपी के घोटाले की फाइल, सबूत है मेरे पास। यही अजीत पवार कह रहे हैं। अभी तो इनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। और अब सवाल यह कि इल्जाम, आप ही से सवाल दोस्तों, कि अगर यही इल्जाम अगर इंडिया गठबंधन के किसी सहयोगी ने दूसरे सहयोगी पर लगाए होते, तो जैसे आरजेडी ने कांग्रेस पर या सपा ने कांग्रेस पर, तो क्या होता? देश की होनहार मीडिया इस बयान पर टूट पड़ती जो अजीत पवार ने जैसे दिया ना। कोई इंडिया गठबंधन का सहयोगी अगर देता, टूट पड़ती। लेकिन यहां देश की होनहार मीडिया का कोई चैनल चू तक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर है। अजीत पवार ने अब क्या कुछ कहा है, आपको अब पूरा बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ जाएंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई 1999 में बीजेपी शिवसेना की सरकार के समय जो सिंचाई योजना की फाइल, जिसकी लागत 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर चढ़ाकर दिखाया गया ताकि पार्टी फंड में पैसे जुटाए जा सके। और ये आरोप किस पर लगा रहे हैं? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ सरकार चला रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी के जो सरकार के मुख्यमंत्री है ना, देवेंद्र फडणवीस, कौन आरोप लगा रहा है? अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों डिप्टी सीएम हैं, और एकनाथ शिंदे भी आक्रामक हैं। लेकिन अब अजीत पवार पार्टी फंड की बात कर रहे हैं, और बात अब यहां पर शुरू होती है। बयान देखिए, अजीत पवार ने जो बयान दिया है, अजीत पवार क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बयान को जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो अब आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए आखिरकार क्या कह रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हिल गई है इस बयान को लेकर, क्योंकि अजीत पवार ने इल्जाम ही ऐसा लगा दिया। 1999 का जिक्र कर रहे हैं, और पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल मेरे पास आई थी, तब इसकी लागत थी 330 करोड़ रुपए दिखाई गई। मैंने फाइल को खारिज कर दिया। जांच करने पर पता चला कि असली लागत सिर्फ 220 करोड़ है। कौन कह रहा है? अजीत पवार। 220 करोड़ की जगह 330 करोड़ दर्शाया गया भारतीय जनता पार्टी ने। यानी सीधे सीधे 110 करोड़ का गबन। 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारियों के लिए जोड़े गए थे। कौन कह रहा है? अजीत पवार कह रहे हैं सरकार भी अगर गड़बड़ी करती, अधिकारियों के बीच कट मनी पहुंचती। कट मनी का जिक्र कर रहे हैं, और उनका यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
कट मनी। मोदी जी कहते थे ना कि विपक्ष की सरकारें कट मनी लेती है, उसी कट मनी का जिक्र यहां पर अजीत पवार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए कर रहे हैं, डिप्टी सीएम कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास फाइल है, फाइल। रकम मंजूर हो जाती तो राज्य पर बड़ा आर्थिक नुकसान होता, वो फाइलें आज तक मेरे पास हैं और ये बयान में साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है। मतलब कि अजीत पवार, इसे यूं समझिए कि तुरुप का इक्का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अजीत पवार ने क्या ढूंढ लिया है। गर्दन अजीत पवार ने अब बीजेपी की पकड़ ली है, क्योंकि अजीत पवार को बार बार तोहमत इसी बीजेपी ने मढ़ी, चक्की पीसिंग है पीसिंग, करोड़ों रुपए का घोटाला। और आज देखिए अजीत पवार डिप्टी सीएम है उसी सरकार में जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं, कहते हैं कि मुझे भ्रष्टाचारी कहने वाले आज मुझे डिप्टी सीएम बना रहे हैं। और देखिए आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर, और इसी खबर में लिखा हुआ है चंद्रशेखर, इन्होंने बयान दिया और कहा कि फाइल अजीत पवार के पास आई थी और उन्होंने ऐसे आरोप अगर होते तो उसी वक्त खुलासा करना चाहिए था, तब उनकी ईमानदारी दिखाई देती। लेकिन अब वो खुलासा क्यों कर रहे हैं? गजब बात है, बीजेपी की भी गजब बात है। यानी अपने साथ कोई आ जाए तो उसके सारे पाप माफ, और अपने खिलाफ कोई जाए विपक्ष में हो तो महाभ्रष्टाचारी। 30-30 साल पुराने विपक्ष के मामलों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। यही इल्जाम लगते हैं ना कि भाई गांधी परिवार को फंसाने के लिए सदियों पुराने, सालों पुराने मामले जो हैं वो खोद खोद कर निकाले जाते हैं। लेकिन यहां एक डिप्टी सीएम खुद आरोप लगा रहे, कह रहे फाइल मेरे पास है, कह रहे तब क्यों नहीं बताया था, अब क्यों बता रहे। यह है चाल चरित्र और चेहरे का जिक्र करने वाली बीजेपी की असली सूरत। लेकिन खैर, अब एक दूसरे पर झूठे होने का इल्जाम मारा जा रहा है। यानी अजीत पवार ये इल्जाम मढ़ रहे बीजेपी पर और बीजेपी उन पर पहले इल्जाम मढ़ चुकी है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? पीएमसी चुनाव के नतीजे एक तरफ और पवार का यूं बयान देना और सियासी तूफान को खड़ा करना क्या संकेत दे रहा है? और जिस समय भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी समर्थित सरकार पर लगाया गया, उस वक्त महाराष्ट्र में 1995 से 99 तक बीजेपी शिवसेना की सरकार थी और सिंचाई मंत्री थे एकनाथ खड़से, और वही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अजीत पवार पहले भी ऐसे इल्जाम लगा चुके हैं और खुले मंच पर लगा चुके हैं। तो क्या अब कोई बड़ा खेल होने वाला है महाराष्ट्र में? मोदी अमित शाह पर सीधे तौर पर वार कर रहे हैं अजीत पवार, और भ्रष्टाचारी दोनों तरफ से एक दूसरे को बताया जा रहा है। अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया गया और अजीत पवार मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, और वही डिप्टी सीएम है उसी सरकार में। तो इसलिए यह सिर्फ मसला जो है, यह मामला जो है बीएमसी चुनाव के नतीजों तक सीमित नहीं है। अजीत पवार के इस नए खुलासे के बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जो साख है ना, उस पर बट्टा लगा है। जीत हार दूसरी तरफ, लेकिन यहां सीधे तौर पर आरोप इल्जाम महाभ्रष्टाचार के हैं। तो क्या अजीत पवार सियासत का नया खाका खींचने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में? और वही बीजेपी, वही मोदी जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, महापुरुष महामान। Yeah, because I'll try to make an exclusive. It's a long one and limited one. I just wanted to show you. And before we say bye, this is what Fadnavis said against Ajit Pawar on 10th January 2006 over corruption allegations. Maharashtra CM Devar criticized Deputy CM Ajit Pawar amid civil poll campaigning in Pune and Pimpri Chinchwadi. Fadnavis accused opponents of diverting from the BJP's development. So he said opponents were trying out of frustration and all. They're trying to divert. So this was a political comment during the elections. The same Fadnavis, who is the chief minister. And now you see this, what he said. माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना. ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर सरकारमध्ये आहे का? आहे ना? तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप BJP stated that he's a corrupt man. This recent one. And he said, if I am in corruption, why is that I am there as a deputy chief minister in BJP's government? It has gone. So he has clearly attacked them and stating, what was the other one?
And in a lighter vein, how this personality has this lighter vein also on the other side. पवार साहब भी पद की शपथ देंगे। अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ तो थोड़ा अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ लेनी है ना। उनका कल समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। So he's the flip side, humor side, how this man doesn't mince his words. That's what I was trying to show you. And very unfortunate that such a leader is no more. And the other aspect I wanted to show you, this I've already shown you. This also you saw, this also you saw. So this again, once again, remembering how accidents kill the popular leaders when they go against the rule of law. And now, our investigation today about the weather in Baramati. On Wednesday, January 28, 2026, the weather in Baramati between 8 a.m. and 9 a.m. is expected to be pleasant and bright. 1. Temperature. The temperature will rise from approximately 66 degrees Fahrenheit, 19 degrees Celsius at 8 a.m. to 72 degrees Fahrenheit, 22 degrees Celsius by 9 a.m. 2. Conditions. The skies will be mostly sunny and clear, with some light haze. 3. Wind. Winds will be light, coming from the east-northeast at 5 to 10 miles per hour. 4. Humidity. The air will be relatively comfortable, decreasing slightly as the morning progresses. And 5. Precipitation. No rain is expected, 0% probability. So I hope the weather over Baramati is clear. So there should not be any iota of doubt regarding the landing in the poor visible weather. I don't know. So this is what the official, this is how they fly and this is the weather pattern they take. Now here, let me show you the Learjet, the 45, about that also. Learjet charter planes are a popular choice in private aviation, known for their speed, efficiency, and ability to operate from smaller airports with shorter runways. Manufactured by Bombardier, these jets are frequently used for business and leisure travel, often accommodating 6 to 9 passengers. Key Learjet models for charter. 1. Learjet 45-45 XR, a very popular This is light the to mid-size plane jet offering a in which fast, he was traveling. comfortable ride, typically seating 8 to 9 passengers with a range of around 2,000 nautical miles. That was the plane which 2. he was trying. Learjet 60-60 XR, a mid-size jet known for its high-speed performance and relatively spacious, stand-up cabin, 5.7 feet height. I'm stopping it here because the cost chartering a Learjet generally ranges from $2,008 to $4,500 per hour, depending on the model. Performance known for rapid climb rates and high cruise speeds. Amenities usually feature the Wi-Fi, reclining leather seat, everything. Calm business travel, medical. So it's a modern plane. That's why I'm showing you. It is a modern plane. So whether I have shown you about the Learjet 45 in which he was traveling. So these are the technical details. Now let us come to the pilots. Captain Shambhavi was a daughter to me, she was a child to me, and both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. Captain Shambhavi Pathak was among the 5 people who lost their lives in the tragic aircraft crash near Baramati in Maharashtra on Tuesday morning. The Learjet 45, operated by Delhi-based non-scheduled air transport company VSR Ventures, went down minutes before its scheduled landing while flying from Mumbai to Baramati. Captain Pathak was serving as the first officer on the aircraft. According to available details, she had a strong academic and professional background in aviation. She completed her secondary education at Air Force Bal Bharti School between 2016 and 2018, followed by the commercial pilot training at the New Zealand International Commercial Pilot Academy. She later earned a Bachelor of Science degree in Aeronautics, Aviation, and Aerospace Science and Technology from the University of Mumbai.
During her career, she also served as an assistant flying instructor at the Madhya Pradesh Flying Club and held a flight instructor rating A. The aircraft was carrying Maharashtra's Deputy Chief Minister Ajit Pawar, his personal security officer, 2 pilots, and a flight attendant. Flight tracking data indicates that the jet took off from Mumbai at 8:10 a.m. and lost signal approximately 35 minutes later, around 20 kilometers from Baramati airport. Investigations into the cause of the crash are underway. Officials have identified other victims apart from Shambhavi and Ajit Pawar as Vidip Jadhav, who's the bodyguard of Pawar, flight attendant Pinky Mali, and Captain Sumit Kapoor. Vijay Kumar Singh, director and key owner of VSR Ventures Private Limited, which operated the ill-fated plane, spoke on the crash. Here is what he said. उसमें ना तो आप थे ना मैं था कोई नहीं था वो पायलट का डिस्कशन था he made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that, the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he's already taken 2 loops, how possible that he not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. 1,500 hours. Yeah. And the captain was very experienced, instructor, examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways. And he was very experienced on this type of airplane also. But the distance was almost more than 6 kilometers from the runway. Do you think it's possible that he could not have seen it, or there could have been any technical? I really don't know because I was not there. Because we are talking about the flight data report. I'm only talking of the information that I have got from the eyewitnesses. When was the last security check done on the aircraft? The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. Captain Sumit Kapoor was a very good friend of mine. Very good friend of mine. He was a brother to me. Yeah. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me. She was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. So unfortunate. They're from Delhi. They're from Delhi. It is very unfortunate this has happened. Please give us time to come out of this irreparable shock. आप लोग जो पूछ रहे हैं वो इस समय मेरे को भी नहीं पता। नहीं सर, 2023 में जो हुआ था, इस समय आज 2023 की बात करने का समय है। इस बार फ्लाइट एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। टेक्निकली द DGCA investigates. The DGCA can only speak, I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. So very unfortunate. You have seen some vital inputs from there. May their souls rest in peace. And before I say bye, again, listen to this. Overall, it will be a sunny and warm start to the day. On Wednesday, January 28, 2026, the weather in Baramati between 8 a.m. and 9 a.m. is expected to be pleasant and bright. 1. Temperature. The temperature will rise from approximately 66 degrees Fahrenheit, 19 degrees Celsius at 8 a.m. to 72 degrees Fahrenheit, 22 degrees Celsius by 9 a.m. 2. Conditions. The skies will be mostly sunny and clear, with some light haze. 3. Wind. Winds will be light, coming from the east-northeast at... I hope I have done my job. So let us wind up here once again. All those who lost their lives, their souls rest in peace, and my heartfelt condolences to the families. What's happening? Who will take the responsibility? Air India crash, and today, and even during UPA rule, we have shown you how the ministers and the chief minister lost their lives in the chopper. What happened? And now, after this government, Modi government took over, we have shown you how many
have lost their life. Two deputy chief ministers, Munde and Ajit Pawar, both from Maharashtra. Both were influential. And the flip side, when everyone is alleging that he was trying to move away, Sharad Pawarji says it is not an accident, as was done by Amit Shah during that Air India crash which killed Vijay Rupani. Even before the investigation, he said it's an accident. Now again, Sharad Pawar playing the same role as Amit Shah. He states, even before the investigation happens, it's accident. So this is the sad state of affairs in India. People have got a right to know the lives lost, including those pilots, attendants, and the bodyguard, including the deputy chief minister. People have got a right to know, as did in 241 on board Air India crash. Till now, there is nothing. Director General of Civil Aviation, is he sleeping? The Telugu Desam party minister, Mr. Naidu, are you still sleeping? Even then, when Vyas Rajshekar Reddy died, I did not repeat what happened at Hyderabad, Langar, where the Bell helicopter was there. So many theories, so many mysteries, so many missing links. But lives keep losing those intermediaries who are supposed to be opponents or herein opponents to challenge, or who are trying to move away. Only those are losing life, not those VVIPs, right from Prime Minister to other chief ministers, who are all in tune with the party high commands. I'm not here to judge anyone differing with me. My number is 9440465339. As I've brought out all the evidences, we love to hear from anyone on this tragic loss. Apart, so many corruption charges against him, 70,000 same Modi and Amit Shah, Fadnavis leveled, pissing. And soon after he joined BJP, the Enforcement Directorate clears him and his family, wife. And then again, his son, previously I've done a show on the land rate and how he brought loss to the state exchequer because of the registering at a lower price. It was a big this thing. During that period also conference, Ajit Pawar clearly challenged the same challenge just before he lost his life. He said, if I'm done a 70,000 crores corruption, how is that I'm there with the BJP and as a deputy chief minister? You should ask them. So this is what it is all about. The truth has to come out. People have got every right to know. No one on this earth can suppress or admonish or impose restrictions on people knowing about the truth, come whatever may. And as Mamata Banerjee demanded, will DGCA, Ministry of Civil Aviation, and even Prime Minister Modi, including the Chief Minister of Maharashtra, Fadnavis, will they allow a probe under the Supreme Court sitting judge as being demanded? Let me rest it at here. Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They're all in larger public interest only. Do support, subscribe and share. Jai Telangana and Jai Hind.